Today we are going to discuss second illumination model, which is diffuse reflection. Diffuse reflection. In the previous session, we have already told that illumination model is of three types. First one is ambient light, second one is diffuse light, and the third one is specularly reflected light. Basically, diffuse light is generated by dull smooth object. So the reflection which is generated by dull smooth object is called diffused reflection. Surfaces that are rough or grainy tend to scatter the reflected light in all directions. This scattered light is called diffusion reflection. It means when a light hit the object and object has a rough source, then it is reflected to various direction. It means light is reflected to all direction. This reflected light is called diffused reflection. In the given example, this is a surface and light is reflected to all the direction. So this reflection is called diffuse reflection. Basically, diffuse reflection are constant over each surface in a scene, which means it is independent of the viewing direction. So हम कह सकते हैं कि जो हमारी viewing direction उससे होती है उससे independent होता है हमारा diffuse reflection. The fractional amount of the incident light that can be diffusely reflected can be set for each surfaces with parameter kd. The diffuse reflection coefficient और diffuse reflectivity. हम कह सकते हैं कि जो हमारा अमाउंट होता है जो रिफ्लेक्ट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक पैरामीटर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है. सपोज दिस इज अवर सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शन. तो जो हमारा रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा के डी, वो क्या होगा हमारा बिटवीन 0 to 1. ये क्या बताता है, जितने अमाउंट से जो हमारी राइट हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है. इफ अ सरफेस इज एक्सपोज्ड ओनली टू एम्बिएंट लाइट, इट मींस दिस इज अ सरफेस, दिस सरफेस did not receive light from a light source directly, but it is receive a light from other object. This is called ambient light. So for ambient light we can express the intensity of diffuse reflection at any point of the surface as I ambient diffusion is equal to kd into ia, where kd is a diffuse reflection coefficient and ia is a intensity of light or ambient light. Now, if we denote the angle of incidence, it means suppose this is our surface, this is normal vector to that surface, and this is the direction of light. So we denote the angle of incidence between the incoming light direction and the surface normal as theta. This is our angle of incidence. Then the projected area of a surface patch perpendicular to the light direction is proportional to cos theta. So we can define it in other terms. The color of a surface means the color of a surface is proportional to the cosine of angle between the surface normal vector and the direction of the light, which is equal to cos theta. So if IL is the intensity of the point light source, then the diffuse reflection equation for a point on the surface in terms of angle of incidence, it can be written as IL diffusion is equal to KD diffusion reflection constant, IL intensity of light, and angle of incidence. Suppose the surface normal vector is a unit vector and vector to the point light source from a position to the surface is in figure, then cos theta is equal to n dot l. It means जो हमारा ये सरफेस है, अगर ये वेक्टर जो है नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या यूनिट है, और ये जो वेक्टर है क्या है,
जो लाइट की डायरेक्शन है उस तरफ है, तो जो इनके बीच में जो cos थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, cos थीटा इज इक्वल टू n डॉट l. बाई रिप्लेसिंग cos थीटा देन वी गेट IL diffusion is equal to KD, where KD is equal to diffusion reflection constant, IL intensity of light, n dot l. Now we can combine the ambient and point source intensity calculation to obtain expression for the total diffusion reflection. It means अगर ये हमारा एक सरफेस है और एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट की एक नॉर्मल वेक्टर है, ये हमारी डायरेक्शन है किसकी, लाइट सोर्स की, तो हमारा क्या हो गया थीटा. तो अगर हम इस पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी निकालें इन टर्म्स ऑफ एम्बियंट लाइट और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, देन द टोटल डिफ्यूजन एट अ सिंगल पॉइंट इज इक्वल टू के ए आई ए, वेयर के ए क्या है, एम्बियंट रिफ्लेक्टेंस, आई ए हमारा क्या, इंटेंसिटी ऑफ light, plus kd diffusion reflection constant, intensity of light, normal vector and the vector to the direction of light. This is the complete formula for diffusion reflection over a point on a surface. Here in this example, if the value of k is 0 and kd range from 0 to 1, if the value of kd is equal to 0, then the object looks like a dull object. If k is value is equal to 1, हम देख सकते हैं क्लियरली जो रिफ्लेक्शन है वो हर तरफ इक्वल हो रहा है. इट मीन्स if this is our surface, this is our point, this is our normal vector n, this is our direction of light v or l, this is our angle of incidence theta. तो अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या देख रहे हैं, थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो डल है हमारा, ये एंगल ज़ीरो है. इट मीन्स जो एंगल हो रहा है इंसिडेंस का वो बहुत कम है, तो ऑब्जेक्ट हमें डल दिखाई दे रहा है. लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू क्या हो रही है 1, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट ब्राइट है. सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन.